Welcome to my YouTube channel. So I will solve a question from mid-sem exam. So if fz equal to uxy plus ivxy, the analytic function where x equal to z plus z bar divided by 2 and y equal to z minus z bar divided by 2y, then we have to prove that del f del z bar equal to 0 for all z. This is the complex form of CR equations. So we will prove this. So first of all, f is analytic. So this is differentiable. F is differentiable. So this means CR equation satisfied. So at this point, any point Z. So if CR equation satisfied, that is if FU plus IV is analytic, that is this will be differentiable, then this will satisfy CR equation. So from this we get UX equal to VY and UY equal to minus VX. So this equation we will use. So now we have to get this operator del z bar. So this operator nothing but del x del x del z bar plus del y del y del z. Okay, this is the chain rule. If any function phi is a function of xy, then we can write del phi del z, where z or z bar is a we treating as independent variable. So therefore this can be written as del x, as this is the function of x. So del phi del x and del x del z bar. Similarly del phi del y del z bar. So in this case, so this is the operator. So now we have to find this del x del z bar and del y del z bar. So for this we will use this. So from this equation we will get, that is x equal to z plus z bar divided by 2. So from this we get del x del z bar equal to half, and y equal to given z minus z bar divided by 2y. So del y del z bar will be minus 1 by 2y. So this will be, if we multiply I both sides, numerator and denominator, so we get I square. So I square equal to minus 1. So this will be I by 2. Okay. So if we put this value del x del z bar equal to half and del y del z bar equal to I by 2 in this equation, so we will get this operator del z bar will be del x. This will be half and plus I by 2. So this will be I del y. So divided by half, that is divided by 2. So this will be half into this. This will be the operator. So now we use this operator. So we have to find this. So del f del z bar will be this half into del f del x plus I into del f del y. So as f equal to u plus iv, so just you put with respect to x, that is del f del x, it will be ux plus ivx. Similarly when you take y, it will be uy plus ivy. So from this we get ux plus ivx plus I into uy plus ivy. Okay. So if we find this, we get I square. So ux minus vy, and this will be plus I into uy plus vx. So we will get this. Okay. So now as f is differentiable, so we get ux equal to vy and uy equal to minus vx. So if you use this in this equation, so ux equal to vy, so this will be 0, and this is also uy equal to minus vx. So if you put minus vx in the place of uy, we get this also equal to 0. So therefore we get 0. Del f del z bar will be 0, and we take z any point from complex number, so this will hold for all z. Okay. So this proved. So that's it. It was very easy if you know the chain rule. So at first help yourself, then
anyone can help you. So for that you have to learn the topic from basic. ठीक है, so after that you will solve this type of question. ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी बहुत क्वेश्चन आ सकता है जो आप कभी नहीं देखे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन में आप नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब इसका दोषी कोई और नहीं, आप ही है। आप खुद से बेसिक नहीं पढ़े हैं ठीक से। एकदम एग्जाम के पहले दिन ही आप देखते हैं वीडियो और यूट्यूब पे जो भी मिलता है आप देखते हैं और एग्जाम में करते हैं वो भी सही से नहीं कर पाते हैं, घूम घाम लिख देते हैं उल्टा पल्टा। सो एक दिन में कुछ नहीं होता है, तो बेसिक से पढ़िए, शुरू से देखिए। सो जो वीडियो जो आप देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, सो हियर CR equation, so differentiability, so you have to know from basic, that is definition, when we say a function is differentiable or not, so how to prove non-differentiability of a function, so all of that you have to know before exam, and after that you can succeed in that exam. ठीक है, so किसी को ब्लेम करने के पहले खुद को ब्लेम कीजिए क्योंकि आप बेसिक नहीं सीखे। बेसिक सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नया आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इट वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इफ यू नो द चेन रूल, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए क्योंकि कोई आपका पूरा एग्जामिनेशन का भार अपने आप नहीं लेगा। जैसे कि मैं आपका पूरा एग्जामिनेशन भार का नहीं ले रहा हूँ, मेरा जो अच्छा लग रहा है, मुझे जो लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, तो आपका अच्छा लग रहा है तो देखिए, लेकिन यही देखने से पूरा एग्जामिनेशन आपको निकल नहीं जाएगा। आपको उसके लिए पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ईच एंड एवरी चैप्टर जो सर क्लास में कवर किए हैं पूरा टोटल देखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज करूंगा और एग्जाम पे वही मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे जो लगेगा कि ये आ सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा मत छोड़िए, आप खुद से करिए टोटल। मैं दो चार एक टॉपिक लूंगा और उसका अच्छे से समझाऊंगा जितना पॉसिबल है मेरे लिए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, लेकिन सबको एक बात बोल रहा हूँ कि पूरा भरोसा किसी और पे मत छोड़िए, खुद के ऊपर रखिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड देखते रहिए। आई विल डिस्कस some questions from mid-sem examination for the upcoming end semester exam. So thank you very much. धन्यवाद।